Hello everyone, welcome to my channel Biofingerprints. In my last videos I had covered many topics of chapter Improvement in Food Resources except Animal Husbandry. You can watch my previous videos of this chapter. The links are provided in the description box. So let's begin with today's topic, that is animal husbandry, and today we are going to cover animal husbandry, its need, cattle farming, poultry farming, fish production and beekeeping. Now, first it's important to know about animal husbandry. So, क्या होता है animal husbandry? It is the systematic management of livestock, and management includes their rearing, feeding, breeding, and also disease control and consumption of products, for example dairy products. Now come to the need of animal husbandry. अगर हम एनिमल्स की बहुत अच्छे से केयर करेंगे तो उन्हें डिजीजेज नहीं होंगी, वो हेल्दी रह सकेंगे और अच्छे से डेयरी प्रोडक्ट्स भी दे सकेंगे. और कुछ प्रैक्टिसेस जैसे ब्रीडिंग, उससे उनकी पॉपुलेशन भी कम टाइम में बढ़ सकेगी और जल्दी और ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमें मिल सकेंगे. इसकी नीड ह्यूमन पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से है कि सबको ये प्रोडक्ट्स मिल सके. सो एनिमल हस्बेंड्री में हम कैटल फार्मिंग एंड पोल्ट्री फार्मिंग पढ़ेंगे. उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कैटल फार्मिंग. सो कैटल बिलोंग्स टू टू स्पीशीज, काउस एंड buffaloes, and I'm writing here their zoological names. The zoological name for cow is Bos indicus, and zoological name for buffaloes is Bos buballis. And what about farming? It is done for milk production, and number 2 for agricultural practices like irrigation. Cattle can be divided into two parts. Number 1 milk animals and number 2 draught animals. So milk animals वो होते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं milk production के लिए. So milk producing females or dairy animals are milk animals. For example Sahiwal. And number 2 type is draught animal. So they are the animals which we use for labor work in fields. So these are the animals which we use for labor work in fields. For example Nageri. Now come to the breeds of cattle. Breeds of cattle can be divided into two parts. Number 1 local and number 2 foreign. लोकल वाले को हम इंडिजिनस भी कहते हैं एंड फॉरेन वाले को एग्जॉटिक. सो लोकल ब्रीड्स वो ब्रीड्स होती हैं जो डिजीजेस के लिए रेसिस्टेंट होती हैं. दे आर हाईली रेसिस्टेंट टू डिजीजेस. फॉर एग्जांपल साहिवाल. एंड फॉरेन या एग्जॉटिक ब्रीड्स वो होती हैं जो जिनके पास लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड होता है. दे हैव लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड. Now what do you mean by this lactation period? Lactation period is the time of milk production after calf birth. So now farm management for cattle. So why is it important to manage farm? So it is important for the health of animals and production of milk in adequate quantity. तो इसीलिए हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है? हमें ध्यान रखना होता है कि उनके पास प्रॉपर स्पेस हो, प्रॉपर शेल्टर हो, और जो स्पेस होने चाहिए होता है वो वेल वेंटिलेटेड स्पेस होता है, और बॉडी से डर्ट रिमूव करने के लिए उनकी ब्रशिंग भी होती है. नाउ कम to the food requirements for cattle. So number 1 method to manage farms is food requirements for cattle. So food requirements for cattle can be divided into two parts: for maintenance and for producing milk. So for maintenance means healthy life के लिए, and for producing milk lactation period में ऐसा food provide कर जिससे उनमें milk production ज़्यादा होता है. To increase the milk production. So lactation period में ऐसा food provide करते हैं उनको जिससे उनमें milk production ज़्यादा हो जाता है. Now there are different types of animal foods: roughage and concentrate. So roughage is a food which is rich in fibers but otherwise nutritive, while it is poor, less nutritive. And concentrates, less fibers
but they are rich in proteins and other nutrients which are very high in quantity. So examples of roughage food are legumes or green fodder. Examples of concentrates are bajra or any other cereal. Now come to the diseases in cattle. First, it's important to know about parasites. So parasites वो organisms होते हैं जो किसी और की बॉडी में या किसी और की बॉडी पर रहते हैं, और हम उन organisms को host कहते हैं जहाँ पर जिनकी बॉडी में या जिनकी बॉडी पर parasites रह रहे होते हैं, और वो वहाँ से अपना सारा न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, but in turn they cause diseases in their body. So parasites are of two types, external and internal. एक्सटर्नल वाला तो स्किन की सरफेस का ऊपर रहता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल दे कॉज स्किन डिजीजेस, फॉर एग्जाम्पल लाइस, माइट्स एक्सेट्रा. एंड इंटरनल एग्जाम्पल worms, liver fluke worms. So they are present inside the body, for example in stomach or in intestine. Now there are different types of diseases in cattle which are categorized into viral diseases, bacterial diseases, and some of the viral diseases are foot and mouth disease, cowpox, rinderpest. This is foot and mouth disease. This is cowpox disease. This is rinderpest disease. Now come to the bacterial diseases. Bacterial diseases are anthrax, hemorrhagic septicemia, black powder. This is anthrax. This is black. Poultry farming. Poultry farming is the rearing of poultry animals like fowls for the production of eggs, chicken and meat. It also includes the production of layers for eggs and broilers for meat. Some crossbreeding programs are also in focus to develop some good or desirable traits or characters in them, like quality and quantity of chicks, survival in summers or in high temperatures, low maintenance, ability to utilize cheaper diet. Now come to egg and broiler production for poultry. Broilers, chicken को हमेशा vitamin rich diet दी जाती है. Vitamin में भी especially vitamin A and K. To avoid their death rate, care is also taken. ब्रॉयलर्स को प्रोटीन रिच डाइट दी जाती है और फैट रिच डाइट भी दी जाती है. इनका मेंटेनेंस कैसे होता है? इनके मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर क्लीनिंग की ज़रूरत होती है, डाइट, सैनिटाइजेशन, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, टेम्परेचर, हाइजीन, वेंटिलेशन, स्पेस, वैक्सीन, इन सभी का ध्यान रखा जाता है. नाउ कम टू फिश प्रोडक्शन. फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स फिन्ड, ट्रू फिश एंड शेल फिश. शेल फिश जिनके पास शेल होती है, फॉर एग्जाम्पल मोलस्कस, प्रॉन्स एक्सेट्रा. नाउ देर आर टू वेज टू ऑब्टेन फिश फॉर फूड. नंबर 1, आप फिश को कैप्चर करते हो. नंबर 2, आप फिश को कल्चर करते हो. सो नंबर 1 इज कैप्चर फिशिंग एंड नंबर 2 इज कल्चर फिश. सो कैप्चर फिशिंग में जिसमें आप सिंपल किसी वाटर सोर्स से फिश को निकाल लेते हो. कल्चर फिशिंग प्रैक्टिस को पिसी कल्चर भी कहते हैं, क्योंकि पिसी कल्चर में पिसी मतलब फिश. तो जिसमें आप स्पेशली पहले फिश की रेयरिंग करते हो, मीन्स उसे गुड कंडीशन में पालते हो, फिर अपने खाने के लिए लेते हो. देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिशरीज, मरीन फिशरीज एंड इनलैंड फिशरीज. मरीन फिशरीज के एग्जांपल्स है पॉम्फ्रेट, मैक्रीन, ट्यूना, सार्डीन्स. इनके अलावा कुछ हाई इकोनॉमिक वैल्यू फिशेस भी होती हैं. फिन फिशेस में जो हाई इकोनॉमिक वैल्यू फिशेस वो है मुलेट्स and pearl spot. Shell fishes, for example prawns, seaweeds and oysters. Oysters for pearl production. Next, inland fisheries. Inland fisheries possible है fresh water में और brackish water में. Fresh water resources हैं आपके canals, ponds and rivers. Brackish water resources हैं estuaries and lagoons. कभी कभी fish culture rice crop के साथ भी किया जाता है, जिसमें rice को पानी मिल जाता है और fish को फूड मिल जाता है. नाउ कंपोजिट फिश कल्चर और पोलीकल्चर. इट्स नेम सजेस्ट poly means many, so many species, around 5 to 6 species of species are grown in a single water body, if you could see in this picture. But ये ध्यान रखा जाता है कि फूड कंपटीशन ना हो, तो सबकी फूड हैबिट्स डिफरेंट होती हैं. सो इसकी एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है. एडवांटेज ये है कि फिश यील्ड इज हाई. डिसएडवांटेज ये है दैट लैक ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स.
Next is beekeeping. Beekeeping is also known as apiculture. It is the rearing of honeybees. Their care and management to get honey and bee wax. हनी बीज के जो छत्ते होते हैं ना, बी हाइव्स जहाँ वो होती हैं, वहाँ से हमें नेचुरल वैक्स मिलता है, and that wax is used for various medicinal preparations and cosmetics. So this was all about animal husbandry part. Thank you so much for watching my video. Please like, subscribe and share.